Now we're going to start the second session, which is titled How to Become a Master Recruiter. अभी मैं अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करता हूँ. इसमें मैं सिखाऊंगा आप एक मास्टर रिक्रूटर कैसे बन सकते हो. You notice it's not titled How to Recruit. इसका टाइटल मैंने ये नहीं रखा कि कैसे करना है आपको रिक्रूट. It's titled How to Be a Master Recruiter. मैंने टाइटल रखा है कैसे आप एक मास्टर रिक्रूटर बन सकते हो. There's a difference between just recruiting and being a master recruiter. बहुत डिफरेंस होता है रिक्रूटिंग और मास्टर रिक्रूटिंग के कंपैरिजन. A master recruiter is somebody who is striving for excellence to be the best that they could be at everything involved in the recruiting process. मास्टर रिक्रूटर वो होता है जो हमेशा अपने आप को अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में. Now, here are the benefits of being a master recruiter. ये है बेनिफिट्स एक मास्टर रिक्रूटर बनने का. Number one is you can earn a leveraged income. इसमें आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं जो लेवरेज इनकम बोलते हैं हम लोग. One of the greatest benefits of this business is that you can earn an income that's not just dependent upon your efforts, but on the efforts of an organization you develop. सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप सिर्फ अपने एफर्ट के ऊपर नहीं पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट के ऊपर आपको इनकम आएगा. Of the 174 crore I have earned, less than 1 crore is as a result of my efforts. 174 करोड़ में जो मैंने इनकम किया है उसमें से बहुत कम है मेरा एफर्ट इसके अंदर. The second benefit is it will make you more money. If you are a master recruiter, you'll make more money than just being a regular recruiter. और दूसरा है अगर आप मास्टर रिक्रूटर बने तो बहुत ज्यादा कमाओगे. सिर्फ रिक्रूटमेंट करने से जो कमाओगे उससे ज्यादा कमाओगे मास्टर रिक्रूटर बन के. And if you strive for excellence at this process and you become a master recruiter, you're going to have better results at everything you do. और अगर आप इसको बेहतर से बेहतर तरह करते हो तो और अच्छा आपको रिजल्ट्स आएगा. And here's a big benefit. और ये सबसे बड़ा से बड़ा बेनिफिट. When you get really good at something, you will become a better teacher. और अब जब इसमें आप बहुत अच्छा बन जाते हैं तो आप एक अच्छा टीचर भी बन सकते हैं. Because when you strive for excellence to be the best that you can be at this recruiting process, you will learn little things that you can then teach other people. तो जैसे आप अपने आप को ठेलते हो बेहतर से बेहतर बनने के लिए आप नए चीज को सीखोगे और यही चीज को लोगों को सिखा पाओगे आप. And as you strive for excellence at this recruiting process, you will be leading by example because everybody will see what you're doing. और बेहतर से बेहतर बनने के चेष्टा में आप लोगों को एग्जाम्पल क्रिएट करोगे अपने ऊपर. आपको देख के लोग आगे बढ़ेंगे. So let's start off with some foundational pillars, as I would call them, to becoming a master recruiter. और इसका फाउंडेशन पिलर क्या क्या होगा मास्टर रिक्रूटर बनने के लिए आइए देखते हैं. Number one is you must be committed to doing whatever it takes as long as it takes to build a successful business. सबसे पहला आपके अंदर वो कमिटमेंट होना चाहिए वो सब काम करने के लिए जितना भी समय लगे उसको करने के लिए. Now you may ask, what does this have to do with becoming a master recruiter? आप पूछ सकते हो ये क्या चीज है मास्टर रिक्रूटर बनने के लिए ये क्या चीज है. Because people that you talk to can tell how committed you are to what you're doing. बिकॉज जिन लोगों से आप बात करते हो वो लोग के पास एक सेंस होता है. उनको मालूम चल जाता है कि आप कैसे रिक्रूटमेंट करते हो. If you're not committed, they can just kind of tell something's not right. अगर आप कमिटेड नहीं हो तो उनके अंदर एक सिग्नल आ जाता है कि आप कमिटेड नहीं हो. उनको मालूम चल जाता है. But when you are truly committed, you will sound different. अगर आप सचमुच कमिटेड हो तो आपके अंदर से वो कुछ दूसरा एक फीलिंग आएगा. You will walk different. आप चलोगे अलग तरीके से. You will look different. आप दिखने में अलग होगे. So the more committed you are, the more success you will have because people will see that you're committed and they will see that you can help them. जितना कमिटेड हो उतना ज्यादा सक्सेस आपको आएगा बिकॉज लोग आपके कमिटमेंट को देखेंगे और आपको फॉलो करेंगे. Next is you must be passionate about what you're doing. आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर. If I'm sitting across the table from someone and I'm introducing this business and I'm just talking like this, how excited are they going to be about joining me? अगर मैं किसी को अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा हूं और वो मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं उसको हल्का फुल्का देख के मैं ऐसे
प्रेजेंट कर रहा हूं तो कैसे लगेगा दिखने में। But if I'm sitting across from somebody and I am excited and I am passionate about what I'm doing, they're going to feel and sense my passion. और जब मैं किसी के सामने बैठ के मैं अपने एनर्जी के साथ, पैशन के साथ बात कर रहा हूं तो वो आदमी मेरा एनर्जी को सेंस करेगा, पैशन को सेंस करेगा वो, And that will influence what kind of decision I get from them. और उसको इन्फ्लुएंस करेगा वो डिसीजन को लेने के लिए। The next foundational pillar is that you must measure your results. और दूसरा है आपको अपने रिजल्ट्स को माप करना पड़ेगा, माप तोल करना पड़ेगा। You see, you can't improve what you don't measure. आप किसी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकोगे अगर उसको मेजर नहीं कर सकते। And when I say measure, this means you track your results. मेजर का मतलब है अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना। You need to track what percentage of the people that you call and invite to look at this business decide to meet with you. आपको ये ट्रैक करना है जितने लोगों से आप बात करते हो उसमें से कितने लोग आपसे मिलना चाहते हैं। And then you should be constantly looking to refine your invitation to increase your percentages. उसके बाद अपने इनविटेशन कॉल को थोड़ा सा रिफाइन करना चाहिए ताकि लोग आपको ज्यादा सुने और ज्यादा लोग आपको मिलने के लिए आए। That's what I did. और यही चीज मैंने किया। And then once I got an invitation that was really working well, I used that invitation on everyone. और जब ऐसे करते करते मेरे को मालूम चला कि ऐसा इनविटेशन जिसको बोलने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को सुनना चाहते, मिलना चाहते हैं, मैंने उसको लेना शुरू किया। You want to measure what percentage of the people showed up for your presentation. आपको यही मापना है कि कितने लोग आपके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए हैं। Because this will tell you how good you are at getting firm commitments from people that they will meet you. ये आपको बताएगा कि आपको आपसे बात करने के बाद आप कमिटमेंट, फर्म कमिटमेंट आपको कितने जन का मिलता है। If people are constantly late for their appointments with you, that tells you that you're not getting firm commitments that you're going to meet at a specific time at a specific location. अगर लोग आपके मीटिंग में सही समय में नहीं आते, लेट से आते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि आपका कमिटमेंट उनसे सही तरीके से नहीं मिला है। If I was in India where everybody is constantly late, I would say, can you do me a favor? If you're running behind, can you give me at least a 1 hour notice so I'm not sitting there waiting for you? अगर मैं इंडिया में होता, जैसे इंडिया में सभी लोग लेट होते हैं, तो मैं उनको बोलता कि आप ऐसा मेरे को फेवर कीजिए, अगर आप लेट होते हैं तो मेरे को 1 घंटा पहले बोल दीजिए प्लीज। So you can see where I'm going with this. You got to constantly be looking at everything you're doing and your results to say, how can I improve these results? तो आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वो सभी चीजों को मैं गौर दे रहा हूं जिसको करके मैं अच्छा से अच्छा बन सकूं। And then you got to ask what percentage joined you. और उसके बाद आपको पूछना है कितने परसेंटेज लोग आपको ज्वाइन किए हैं। Even as I look back on my real estate career, I tracked all my numbers. मेरे रियल एस्टेट करियर में भी मैंने अपने नंबर्स को मैंने ट्रैक में रखा था। I knew how many calls I needed to make a certain amount of money. मेरे को मालूम था कितना कॉल करना है मेरे को कि मेरे को अगर इतना पैसा बनाना है तो। My last year selling real estate, my goal was to make $400,000 US. मेरा गोल था 4 लाख US डॉलर बनाने के लिए रियल एस्टेट से। Because I tracked my results, I knew I needed to go and meet with 252 prospective sellers so that I could hopefully put their home on the market. और मैं अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करता था, इससे मालूम चला कि मेरे को इतना पैसा कमाने के लिए 252 प्रोस्पेक्ट्स को मेरे को कॉल करना चाहिए था। I knew how many phone calls I needed to make in order to get 252 appointments. और मेरे को ये मालूम था कितना मेरे को फोन कॉल करना पड़ेगा 252 अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। See, most people would set a goal, I want to make $400,000 this year, but have no clue how many calls they needed to make $400,000. बहुत लोग बोलेंगे मेरे को 4 लाख डॉलर बनाना है, बट उसको क्लू नहीं होता कि कितना फोन कॉल करना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। At the end of the year, I ended up going on 250 appointments, too short of my goal. और पूरे साल के लास्ट में मेरे को 250 कॉल मिले, मेरे को 2 शॉर्ट था मैं। My goal was to sell 117 homes at my average commission, and at the end of that year, I had 115 sales, too short of my goal. मेरा गोल था 117 घर बेचने के लिए, और साल के लास्ट में मैंने बेचा 115 घर। But because of appreciation, और जो दाम बढ़ चुका था हमारे वहाँ, I made $401,000. और मैंने 401 लाख मतलब $4,01,000 मैंने कमाया।
So the first thing you want to do when you set a goal, you got to set a goal, तो सबसे पहले अगर आपको एक गोल सेट करना पड़ता है, build your knowledge, उसके ऊपर आपको नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा, put together your plan, अपने प्लान को लगाना पड़ेगा, उसके बाद execute your plan with excellence, उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, and then refine what you're doing as you learn. और जैसे आप काम करते रहते हो उसको थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा. So as you're measuring your results, you're going to be able to build a very predictable source of income. जैसे आप अपने रिजल्ट्स को जब मेजर करते रहते हो तो अपने इनकम के बारे में भी आप अच्छी तरह से सोच सकोगे. And whatever percentages you have in February, your goal in March is to increase those percentages. जो भी परसेंटेज आपका फरवरी के महीने में है, आपका गोल होगा मार्च के महीने में उस परसेंटेज को बढ़ाना. By making small little refinements. छोटी छोटी रिफाइनमेंट्स करके आप ये कर सकते हो. And here's the thing, as you make these small little refinements, it's the compounding effect of these refinements that will allow you to become diamond and become a maximum income earner. और ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आप रिफाइनमेंट करते रहते हो तो आपका चांस डायमंड बनने का बहुत ज्यादा हो जाता है. So remember, you're not going to go from here to here overnight. आप ये जानिए कि आप यहां से यहां एक रात में नहीं जा सकते. It's going to be small little improvements every day that you're making that will allow you to grow. छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स के साथ आप बड़ा हो सकते हो. Just as you see people on the streets, people don't go from making this kind of income to this kind of income in 1 month. जैसे लोग हमारी दुनिया में यहां से वहां तक एक महीने में नहीं जाते. It's small little improvements that they make every day that builds their value. छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर जाके वो काम करके अपने वैल्यूज को बढ़ाते हैं. Another foundational pillar is you must strive for excellence at always asking yourself, how did I do? What could I have done better? अपने आप को बेहतर से बेहतर बनने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए, मैंने क्या किया, इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ. Everything you're doing, you ask yourself, how did I do? What could I have done better? सभी चीज जो आप करते हो उसी के ऊपर आप पूछ सकते हो अपने आप को, मैंने क्या किया, इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ. And for those of you whose ranks aren't growing, you're probably not asking yourself this question because you're not growing. जिन लोगों का रैंक अभी ग्रो नहीं हो रहा है, शायद आप लोग ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं अपने आप से. Another foundational pillar is you must be consistent in making prospecting part of your daily life. और दूसरा है आपका जो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका, इसको कंसिस्टेंटली करना चाहिए डेली के हिसाब से. Now, one of the things I encourage all of you to do is to set a goal for how many invitations you're going to make each day. अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, एक गोल सेट कीजिए, हर एक दिन में आप कितने इनविटेशंस कॉल करेंगे. If you're part-time, it might be 2 invitations a day. अगर आप पार्ट टाइम में हो तो दिन में 2 इनविटेशन हो सकता है. Then you say 2 a day every day. तब आप बोलोगे 2 हर दिन. If you're full-time, it अगर आप- might be 5 a day. अगर आप फुल टाइम में हो तो 5 दिन में. But you must be consistent. आप जो भी करते हो वो कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए. You see, if you take a penny, a US penny, and you double it every day for 31 days, there's a big difference between every day and every other day. अगर यूएस का जो हमारा पेनी है उसको हर एक दिन अगर आप डबल करते हो तो उसमें बहुत फर्क आता है महीने के लास्ट में. You see, if you double a penny every day, it goes to 2 pennies, 4 pennies, 8 pennies, 16 pennies. अगर आप ये यूएस पेनी को डबल करते हो तो 2 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 16, ऐसे करके बढ़ता है वो. And at the end of 31 days, it turns into 10 million US dollars. और 30 दिन के बाद वो होता है 10 मिलियन यूएस डॉलर. If you double it every other day, it's less than 20 US dollars. पर अगर आप एक दिन छोड़ छोड़ के उसको डबल करते हो तो वो 20 यूएस डॉलर के बराबर होता है. The same is going to be true in your business. और यही चीज आपके बिजनेस में भी होगा. If you are inconsistent, your results aren't going to be that impressive. अगर आप लगातार सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट भी कंसिस्टेंट नहीं होगा कभी. But if you are consistent every day, just like the doubling of a penny, you will see amazing results over time. अगर आप कंसिस्टेंटली जैसे एक पेनी को हम लोग रोज डबल हो जाता है वैसे करते हैं तो आपके ओवर टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है. Now, at what point should you stop recruiting? कौन से समय में हमको रिक्रूटमेंट स्टॉप करना चाहिए, क्या समय में? So, at what point should you stop recruiting? तो कब आपको रिक्रूटिंग बंद करना चाहिए?
Here's what I learned when I joined the industry, and here's what I have followed. और ये मैंने सीखा था जब मैंने ज्वाइन किया इस यूनिवर्सिटी को, और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। You recruit, you recruit, you recruit until the time you're spending recruiting is taking away from the time that you should be spending with people. आपको रिक्रूट तब तक करना चाहिए जब तक आपका समय आपके नीचे वाले लोग आपसे नहीं मांगते। You see, if I'm honest with you, I don't like recruiting. अगर सही बोलना है तो मैं रिक्रूटिंग पसंद नहीं करता। It makes me feel uncomfortable. मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल होता है। Still, after 27 years, I don't like recruiting. 27 साल के बाद भी मैं रिक्रूटिंग मेरे को अच्छा नहीं लगता। I can tell myself I like recruiting, but I know I don't like recruiting. मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है, पर एक्चुअली मेरे को अच्छा नहीं लगता। So you know what I've done since I don't like recruiting? आपको मालूम है मैंने क्या किया सिंस मेरे को अच्छा नहीं लगता? I work with the people I recruit. और मैं क्या करता हूँ, मैं जिनको रिक्रूट करता हूँ उनके साथ मैं काम करता हूँ। I'm talking to them every day. मैं उनके साथ रोज बात करता हूँ। I'm helping them refine their invitation every day. मैं उनको हेल्प करता हूँ उनके इनविटेशन के ऊपर काम करने के लिए। I'm meeting with their first few prospects. मैं उनके पहले प्रोस्पेक्ट से मिलता हूँ I'm helping them get their first few new distributors started. और उनके नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्टार्ट करने के लिए मैं हेल्प करता हूँ। I'm coaching them and teaching them what they should be doing to continue to build their business. मैं उनको कोच और सिखाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। So I sponsored 20 people my first month. पहले महीने में मैंने 20 लोगों को स्पॉन्सर किया। I was overwhelmed. मैं बहुत खुश था। I've only sponsored 37 people since my first month. मैंने अभी तक 37 लोगों को ही स्पॉन्सर किया पहले महीने में। 57 people total in 27 years. और 27 सालों में मैंने 57 लोगों को स्पॉन्सर किया है। That's just a little over 2 people a year. उसका मतलब एवरेज होगा दो आदमी साल में। That's because I am very intentional about selecting the right people to recruit उसका मतलब मैं बहुत इंटेंशनल हूँ कि सही लोगों को मैं रिक्रूट करूंगा and then working with those people and helping them build successful businesses. और उनके साथ काम करूंगा ताकि उनका बिजनेस को मैं आगे बढ़ा के ले जाऊं। The next foundational pillar is if you're going to have success being a master recruiter, you need to be someone that people like and respect. और अगर आपको एक मास्टर रिक्रूटर बनना है तो आपको एक ऐसा आदमी बनना पड़ेगा कि लोग आपको चाहेंगे और आपको इज्जत करेंगे। If they don't like you or they don't respect you, they're not going to join you. आपको अगर वो चाहते नहीं है, आपको इज्जत नहीं करते, तो वो आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे। And if they do join you, they're not going to follow you and listen to you. अगर वो ज्वाइन भी कर लेते हैं तो आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपको नहीं सुनेंगे। See, you're leading a volunteer army in this business. आप एक वॉलंटियर आर्मी को लीड कर रहे हो। If people are going to follow you, they need to like you and respect you. अगर आपके लोग आपको फॉलो करेंगे तो वो आपको चाहना चाहिए, आपको इज्जत भी उनको देना पड़ेगा। So you want to be doing the things every day that cause people to like you. आप हर एक दिन आपको ऐसा काम करना है ताकि आपके लोग आपको चाहें। And becoming the kind of person that you need to be that people respect you. और ऐसे आदमी बने ताकि लोग आपको इज्जत करें। The next foundational pillar is that you must be consistently cultivating relationships. और दूसरा है एक रिलेशनशिप के ऊपर आपको काम करना है। You see, it's not just who you recruit today that matters. ये नहीं है कि आप जिसको रिक्रूट करते हो वही सबसे बड़ा चीज है। It's who you recruit 3 and 4 years from now that matters too. आज से 3 या 4 साल पहले जिसको आप लाओगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। So you want to be constantly developing relationships with people. उसका मतलब हमेशा लोगों के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए। It may not be the right time in someone's life today to join you, but it might be the right time in 2 years. किसी का सही समय नहीं हो सकता, अभी वो आपसे ज्वाइन नहीं कर रहा है, पर 2 साल के बाद शायद उसका सही समय आ जाएगा। And if you've continued to build a relationship over those years, then when they think about doing something else, they're going to think about you. इन सालों में अगर उनसे आप अच्छी तरह बिहेव करते हो, रिलेशन बिल्ड करते हो, तो समय के समय में वो शायद आपसे ज्वाइन भी करेंगे। So what should you do to build meaningful relationships? तो क्या करना चाहिए एक अच्छा रिलेशनशिप को रखने के लिए? One of the most important words is this word, intentional. You must be intentional every day about building relationships. आपका ये है, इसको करने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए करने के लिए। The next thing you need to do is you need to stay in touch with people without an agenda. आप दूसरा है लोगों के साथ आपको टच में रहना चाहिए, कुछ पाने के लिए नहीं, जस्ट टच में रहना चाहिए। You're building relationships not because you want to recruit people, but because you value these relationships. आप रिलेशनशिप को इसलिए रख रहे हो रिक्रूटमेंट के लिए नहीं, बिकॉज आप उनको चाहते हो इसीलिए।
You also want to be, if you're on Facebook or other social media sites, you want to be commenting on people's posts and liking them. अगर आप फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया में हो, तो आपको कमेंट्स देता रहना चाहिए इन चीजों के ऊपर. You see, most people are going to notice if you comment on something that they posted. अगर आप कमेंट करते हो तो वो उसको नोटिस करता है. Most people are going to notice if you clicked on like. जब आप लाइक क्लिक करते हो तो वो नोटिस करता है. Every time you click on like on somebody's post, they feel that you like them. जैसे ही आप लाइक करते हो दूसरे के उस पोस्ट के ऊपर, वो उसको लगता है कि आप उनको चाहते हो. It's all about being intentional to show your interest in others. ये सब इंटेंशन के ऊपर ही होता है. Another foundational pillar is you must master the process of how to invite. और दूसरा है इनविटेशन का प्रोसेस के ऊपर आपको मास्टर बनने का कोशिश करना पड़ेगा. You need to be a master inviter. आपको एक मास्टर इन्वाइटर बनना होगा. That means you have a high percentage of people that you invite that agree to meet with you. उसका मतलब जिससे आप बात करते हो वो आपसे मिलने के लिए रेडी होता है. हाई परसेंटेज लोग. Because if you don't have a high percentage that agree to meet with you, you're going to be spending a lot of time continuing to invite and then you're going to run out of contacts. अगर आपके लोग आपको ज्यादा नहीं सुनते हैं तो ऐसा आपको बहुत आएगा कि आप बात करने के बाद वो नहीं आएंगे आपसे मिलने के लिए. So you want to start this recruiting process by making a list of everyone you know. रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा वैसे लोगों का जिन लोगों को आप जानते हो. The average person knows 2,000 people. एक एवरेज आदमी 2000 लोगों को जानता है. Now you might be thinking, I don't know 2,000 people. आप सोच रहे होंगे कि मैं तो नहीं जानता 2000 लोगों को. If I gave you 1,000 rupees for every name you put on a list and you had until Sunday morning to make your list, I bet you would think of 2,000 people. अगर मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ एक नाम के लिए और आपको संडे तक समय देता हूँ, मैं बोलता हूँ सही का मतलब दावे के साथ आपके पास 2000 लोग आ जाएंगे. So be creative and make a list of just 200 people. तो अभी मैं बोलता हूँ कि आप 200 लोगों का ही नाम लिखिए. Go through your cell phone and look at every contact in your cell phone. अपने सेल फोन को देखिए और वहां जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखिए. And when you meet new people and you have them in your cell phone, make sure you put their name in there. और जब आपके उनको वहां आपको दिखता है उनके नाम, उनके नाम को लिखिए आप. So you're not just looking at a number not knowing whose number it is. और सिर्फ नंबर नहीं, आप नाम भी लिख रहे होंगे बिकॉज नंबर देखने से आपको नहीं होगा. सिर्फ Look through your email program. आप ईमेल को चेक कीजिए. Go through all your social media contacts. जो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं उनको चेक कीजिए. We have what we call a memory jogger in the United States. You can Google it, and it's where you think about people like, who's my accountant? Who does my hair? हमारे यूएस में एक मेमोरी जॉगर है, वहाँ हमारे बहुत कॉन्टैक्ट्स भी रहते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं. So be creative and make a list of as many people as you can think of. क्रिएटिव बनिए और एक लिस्ट बनाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों का. And then what you want to do is you want to be constantly every day adding people to this list. उसके बाद हर एक दिन इस लिस्ट को भी आपको ऐड करता रहना चाहिए. Every day you meet new people, have a conversation, exchange contact information with them. जैसे जैसे नए लोगों को मीट करेंगे डेली के हिसाब से उनके नाम को भी आप लिखते जाइए. And then maybe go and friend request them through the social media platform you use. और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उनसे टच में रहिए. Join social sites. एक सोशल साइट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. Yeah, so whatever ones are popular here in India, you should be on. जो साइट पॉपुलर है इंडिया में उनके साथ आप जुड़िए. Great way to expand your list. ये बहुत अच्छा है सोर्स जहां आपकी लिस्ट को आप बड़ा कर सकते हैं. Because if you're on a social site and you've got friends, you can then go through and look at all their friends and you might say, oh, I know this person that I didn't think of. अगर आप सोशल मीडिया में रहते हो और आपके दोस्तों को देखते हो, उनके दोस्तों को देखते हो, तो वहां से जाके आपको बहुत बड़ा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाता है. And then connect with that person. उसके बाद उनके साथ कनेक्ट कीजिए. Join groups and clubs. क्लब्स और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. These could be groups and clubs here in India. जैसे इंडिया में बहुत क्लब्स हैं. Or they could be ones that are social groups and clubs through Facebook and other social media platforms. या सोशल क्लब है जो आपको सोशल मीडिया या फेसबुक पे मिलेगा. If there's some area of interest you have, like you've got a special kind of dog, I guarantee you there's clubs for people who have the same kind of dog you have. अगर आपके पास सपोजिंग डॉग है और आप उस क्लब में भी जा सकते हो जहां बहुत लोग हैं उनके पास भी डॉग्स होते हैं. ऐसा भी कुछ क्लब हो सकता है. If you love to cook, there's all kinds of cooking clubs.
और अगर आपको कुकिंग में दिलचस्पी है तो यहाँ कुकिंग क्लब भी होगा शायद। So whatever your interests are, there's clubs that have groups of people that have the same interest as you. तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो यहाँ क्लब होना चाहिए इंडिया में, जहाँ वैसे लोग इकट्ठा जमा होते हैं। And then another way to expand your list is to ask for referrals. और दूसरा है एक आप रेफरल भी लोगों से पूछ सकते हैं। And then just be creative and think, how can I think of additional people I know? और थोड़ा क्रिएटिव बनिए और सोचिए कि और ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट मेरे को कहाँ से मिल सकते हैं। As you make this list, you want to categorize people. और इस लिस्ट को जब बनाओगे तो आप उसको कैटेगरी कीजिए। Put a B for business next to the people that you would want to approach on the business. लोगों के सामने बी लिखिए अगर उनको बिजनेस के साथ आप अप्रोच करोगे। Put a P for product next to the people that you would rather just approach on the product. नाम के सामने पी लिखिए अगर उनको प्रोडक्ट के साथ आप अप्रोच करोगे। And then put a star next to the people that you think are the most impressive, most successful people. एक स्टार लिखिए उनके आगे में अगर वो बहुत इंप्रेसिव और अच्छे लोग हैं। One of the ways I started my business so quickly is that my sponsor told me, Todd, you start with the sharpest, most successful people you know. मेरे को याद है मेरे बिजनेस में मेरे स्पॉन्सर ने बोला था तुम हमेशा सबसे स्मार्टेस्ट लोगों के साथ बिजनेस को स्टार्ट करो। And because I recruited some of the most successful people I knew, they were highly respected by the people that knew them, so they had great success. और इसी तरह मैंने सक्सेसफुल लोगों को मैंने रिक्रूट किया और उन्होंने भी जाके आगे अच्छे लोगों को उन्होंने लाया। So let's talk very briefly about how to use social media sites. अब मैं दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया साइट को कैसे यूज किया जाता है। You want to use them to build your brand? आपको उसको यूज करना है आपके ब्रांड को बनाने के लिए। Know that every post you put up causes people to form an opinion of you. जो भी पोस्ट आप वहां में पुट करते हैं उस पोस्ट को देख के लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं। So that becomes your brand. और वही चीज आपका ब्रांड बन जाता है। You also want to use social media sites to expand your contacts. और सोशल मीडिया साइट से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को भी बड़ा कर सकते हो। If you're part of a special dog group on Facebook and you're talking and communicating with people, then you want to friend request them. तो अगर आपके पास एक ड्रॉप ग्रुप है तो आप अपने फेसबुक में वैसे कुछ भेज सकते हो ताकि वैसे लोग आपके पास आए कॉन्टेक्ट में। And then build a relationship with that person. और जब वो लोग आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। And then maybe you send the person an instant message and says, "Hey, I got something I'd like to talk to you. When do you have 5 minutes?" और फिर आप उनको कर सकते हैं मैसेज कि मेरे पास एक आदमी है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कब आपके पास समय होगा। Then you take that online relationship offline. फिर ऑनलाइन से आप ऑफलाइन तक आ सकते हो उनके साथ। You use social media to build relationships. आप सोशल Monitor what's going on in people's lives. और इसको यूज कर सकते हो लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने के लिए। Somebody just lost their job. It'd be helpful to know that, wouldn't it? अगर किसी का नौकरी चला गया, अगर आपको खबर हो गया तो आपको कैसा लगेगा अभी? You don't use social media to market your business. आपको सोशल मीडिया यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए। Here's what I've noticed about the people who tag me in posts that have nobody who likes them. मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को टैग करते हैं, फिर मैं देखता हूं उनको कोई लाइक नहीं करता। They got unicity as part of their name. उसमें उनका नाम है यूनिसिटी के साथ। They got unicity posts all over their page. और उनके नाम के साथ यूनिसिटी का पोस्ट है चारों तरफ। You see, it is absolutely proven that people don't want to be looking at all their friends' pitches for the businesses their friends are in. ये प्रूव हो चुका है कि जब आप दोस्तों से बात करते हो तो ये बिजनेस का जो पोस्ट है ये बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा। You see, for those of you who are friends with me, you don't see any of that on my page. जो लोग मेरे साथ दोस्त में हैं, आप क्या मेरे को यूनिसिटी के पोस्ट देखते हैं मेरे साथ? So you want to make sure that your people that you're bringing into your business know how to use social media. Otherwise, they could ruin all of their best contacts. इसीलिए मैं चाहता हूं आप अपने लोगों से बोले कि सोशल मीडिया को यूज करने को सीखे वो। Somebody new joins and says on social media, "I just joined Unicity. Who wants to join me?" एक नया आदमी हमारे बिजनेस में ज्वाइन करता है और फेसबुक में पोस्ट करता है कि मैं ज्वाइन किया यूनिसिटी, कौन मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है। And then when they try to reach out to somebody to invite them, the person says, "I know why you're calling me. You're in that network marketing company, Unicity." और जैसे ही वो किसी को फोन करता है तो वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम एक कंपनी में हो, उसका नाम है यूनिसिटी। Now, what method is most effective at introducing the business? सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है हमारे बिजनेस को दिखाने के लिए? If you want to have high results, you want to always be looking at what's most effective. अगर आपको हाई रिजल्ट चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा ऐसा एक उपाय। So number one, you're going to have your greatest results in gaining positive decisions when you
meet face to face with people. सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जब लोगों के साथ आप फेस टू फेस मिलेंगे। Second would be through video conferencing. और दूसरा हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ। Yeah, if you've got an Apple iPhone and you're talking to somebody else that does, maybe you want to communicate with them or invite them over FaceTime. अगर आपके पास एप्पल फोन है और उसके पास भी एप्पल फोन है, आप लोग वीडियो कॉल कर रहे हो और एक समय में उनसे मिल भी सकते हो, आप बात करते करते। Android has got the same feature where you can communicate with video to people. आपके एंड्रॉइड में भी वैसे ही फीचर है जहां आप वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो। If people can see your face and you can communicate with them, you're going to have a higher percentage of success than if they can't see your face. जब लोग आपसे बात करते समय आपके फेस को देख सकते हैं, आपका सक्सेस ज्यादा होना जरूर मतलब होगा ही। And then the third most effective way is over the phone. और उसके बाद तीसरा नंबर में फोन से हम लोग भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। Now, your invitation, if you want to strive for excellence, to have the highest percentage of people agree to meet with you, your invitation needs to create curiosity and interest. अगर आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मिलने के लिए रेडी हो, तो आपको चाहिए एक ऐसा इनविटेशन जहां आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट क्रिएट करें। If you're looking to recruit somebody to join your business, you never ever talk about product in your invitation. अगर आपको अपने साथ इस बिजनेस में किसी को लाना है, तो आप कभी भी प्रोडक्ट के बारे में बात मत कीजिए। Because any smart person is going to say, this is a network marketing company. कोई भी स्मार्ट आदमी ये सुनता है तो बोलेगा ये क्या नेटवर्क कंपनी है। So you want to be using an approach that doesn't sound like network marketing. आपको एक ऐसा अप्रोच यूज करना पड़ेगा जो एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा नहीं साउंड करता। If people are always asking you, is this network marketing? That's because you sound like you're inviting them to look at a network marketing business. अगर बार-बार लोग आपको पूछते हैं कि ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तब आप समझ जाओ कि आप कुछ गलत बोल रहे हो, आपको सही तरह से बोलना पड़ेगा अभी। That's a big red flag. Hey, there's something I'm saying that's causing people to ask this question. ये एक लाल झंडा जैसा है आपके फोन कॉल में। So then you adjust your invitation. अभी आपको अपने इनविटेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। In the training manuals that all of you are using, there's great invitations in there. जो आपके पास ट्रेनिंग किताब है उसमें सारे कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। Another thing you want to have is if you're going to be a master recruiter, you need to know what you're going to say if somebody says, well, what do you do? अगर आप मास्टर रिक्रूटर हो तो आपको ये जानना पड़ेगा, अगर लोग पूछते आप क्या करते हो, आप क्या बोलोगे तब? We call it an elevator pitch because you could be getting in on the first floor, go into the third floor, and you got to be able to tell somebody what you do before that door opens. ये होता है, हम लोग बोलते हैं एलिवेटर पिच, मतलब आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाते हो, ऊपर तक जाते हो और आपको बोलना है कि आप क्या कर रहे हो अभी। So if I'm in India and somebody asks me what I'm doing, here's what I would say. अगर मैं इंडियन हूँ और मेरे को पूछता है कोई आप क्या करते हो, तो मैं ये बोलूंगा, I'm a recruiter with the world's leading metabolic health company operating in 49 countries. मैं एक रिक्रूटर हूँ एक लीडिंग अमेरिकन मेटाबॉलिक हेल्थ कंपनी का जो 49 कंट्रीज में काम कर रहा है। We are now expanding into India in my roles to find the right people to help develop this region of India. अभी हम इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं और मेरा काम है सही लोगों के तलाश में हूँ जो हमारे साथ इस कंपनी में काम कर सके। You look like a sharp person. Do you ever think about doing anything else? आप दिखने में बहुत अच्छे हो, क्या आप सोच रहे हो कि कुछ और भी आप करोगे? Or when you get done with this, you could say, what do you do? और या आप ऐसे भी पूछ सकते हो आप क्या करते हो? And then you show an interest in them and what they do. और आप वो जो काम करते हो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेते हो। Or you could just build a relationship and approach them later. या उसके ऊपर आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। Or you can say, do you ever think about doing anything else? और या पूछ सकते हो कि आप इसके सिवा और कुछ करना चाहते हो क्या? Yesterday at the airport, somebody asked Kishore what he did. कल किशोर को पूछा था एयरपोर्ट में कि आप क्या करते हो? He had his response. मैं उसने बोला, And he says, do you ever think about doing anything else? और उसने बोला कि आपने कभी सोचा कि कुछ और करने के लिए? The guy laughed and smiled and said yes. और वो उसने हंसा और उसने बोला हाँ। They exchanged contact information. फिर उसने अपने कांटेक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया। The guy wanted to know what Kishore did, and he said, "Hey, I'll give you a call when I get back, and we'll talk then." और उसने बोला किशोर को तुम क्या करते हो? तो किशोर ने बोला मैं जब वापस पहुंचूंगा घर तब मैं तुमको फोन करूंगा। So this is why you need to know if somebody asks you what you're doing, you need to have a response ready. और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब आपको कोई पूछता आप क्या करते हो, आपके पास रिस्पॉन्स रेडी होना चाहिए। Now, you need to be somebody that has a master response to the questions that you get. आप एक ऐसा आदमी होना चाहिए कि आप
आपका रिस्पॉन्स सही होना चाहिए हमेशा। If your invitation creates curiosity and interest, people are going to say, "What is it that you do?" अगर आपका इनविटेशन में इंटरेस्ट हो या क्यूरियोसिटी हो तो लोग पूछेंगे क्या करते हो आप, Or tell me more. और कुछ बोलिए आपके बारे में। So you have to be prepared for that question. इसीलिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि ऐसा प्रश्न जब आए तो आप क्या बोलोगे। You remember what I shared with you in the first session today when I was invited and I asked questions? आपको याद है पहले सेशन में मैं बोला था सुबह में कि जब मेरे को बुलाया था किसी ने, मैंने उनको प्रश्न पूछा था। He was prepared. पर वो आदमी प्रिपेयर था, He didn't stumble. वो स्टम्बल नहीं किया। He didn't say, "Hold on, I got to pull out my training manual." तो उसने नहीं बोला रुक जाओ मैं कुछ निकालता हूं तुमको बोलने के लिए। The best response is this. This is not a business that can be explained over the phone. सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये है, ये ऐसा कुछ चीज है जो मैं फोन में आपको नहीं बोल सकता। If you would have an interest in learning what we're doing, I would enjoy getting together and show you and seeing if it's something that you would want to explore further. अगर आपको सही में इंटरेस्ट है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं आपको। You need to master your follow-up questions for people who are persistent. उसके बाद आपको मास्टर होना पड़ेगा जो प्रश्न पूछेंगे उसके ऊपर। Somebody's going to say, "Well, I need to know a little bit more." कोई बोलेगा आपको थोड़ा और बोल दो मेरे को। I appreciate your interest in learning more, but the only way to truly understand what we're doing is to sit down and let me show you. मैं जानता हूं आप बहुत इंटरेस्टेड हो, पर मैं सचमुच आपसे मिल के बैठ के मैं दिखाना चाहता हूं। Would you have an interest in having a cup of coffee or tea and allowing me to show you our business? क्या हम कॉफी या चाय पी के बैठ सकते हैं और मैं आपको क्या दिखा सकता हूं या हम क्या कर रहे हैं। You see how these responses create curiosity and interest? अभी आपको दिख रहा है कि हमने कैसे क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को लगाए रखा। None of them say unicity. कहीं भी हमने नहीं बोला यूनिसिटी, None of them say products. हमने प्रोडक्ट भी नहीं बोला, None of them even use the word opportunity. और ना ही हमने अपॉर्चुनिटी बोला। See, in the United States, you say opportunity, that means network marketing. अमेरिका में अगर आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी तो वो समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। So we say business venture, हम लोग बोलते हैं बिजनेस वेंचर, business project. बिजनेस प्रोजेक्ट। So if you're getting people saying, "Is this network marketing?" you got to look at every word you're using. अगर आपको कोई बोलता है क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तब आपको अपने आप को चेक करना है आप क्या बोल रहे हो। And then you need to master a response if somebody says, "Is this network marketing?" अगर कोई बोलता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, तब आप क्या बोलते हो। Now you could use one of the responses I just shared with you, अभी जो मैंने आपको एक बोला था रिस्पॉन्स, वो आप शेयर कर सकते हो, or you can use this one. और आप ये यूज कर सकते हो। Our business model is built on the strengths of different business concepts, including franchising and direct sales. हमारा बिजनेस डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट में बना हुआ है या डायरेक्ट सेल्स में बना हुआ है। When you learn more about our company and what we're doing, you will see what makes us unique. जब आपको मैं दिखाऊंगा हमारे कंपनी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा हम लोग क्या अलग काम कर रहे हैं। And then anytime you respond to a question, you always want to go for the appointment. और जब भी वो प्रश्न पूछने का ट्राई करता है, आप उसको अपॉइंटमेंट के लिए पूछिए। So you would say, "What does your schedule look like over the next couple days so that we can get together?" तो उसको पूछिए आपका शेड्यूल कैसा है, इस सप्ताह में कब हम लोग मिल सकते हैं। Now, you can use this approach and measure your results. इस अप्रोच को करके भी आप अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। If it's working good, you keep using it. अगर सही रिजल्ट मिल रहा है आपको तो इसको यूज करते जाइए। If you want to try something different that you think will work better, then try something different and measure it. अगर आपको लगता है कि इससे भी बेहतर कुछ आपके पास है, उसको आप लागू कीजिए, उसके बाद उसको मेजर कीजिए। I used one approach with 10 people and a different approach with 10 others. मैं एक अप्रोच 10 लोगों के साथ यूज करता हूँ, Which one worked better? कौन सा और अलग अलग अप्रोच भी यूज करता हूँ और देखता हूँ कौन सा अच्छा काम कर रहा है। You see, all the top internet companies do what's called split testing. और जितने भी इंटरनेट कंपनी है दुनिया भर में, वो स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं। They test one page against another page एक पेज के साथ दूसरा पेज टेस्ट करते हैं to see which one converts higher. और ये देखते हैं कौन सा किस में कन्वर्जन ज्यादा है। That's exactly what you should be doing, is you should be testing one approach against another to see which one converts higher. यही आपको करना है, एक अप्रोच और दूसरा अप्रोच को आपको अप्लाई करना है, देखना है कौन सा अप्रोच ज्यादा काम में आ रहा है। You need to master getting firm commitments. आपको मास्टर बनना है कमिटमेंट मिलने में।
Because if you're not good at getting firm commitments, you're going to be spending a lot of time waiting for people to show up that aren't coming. अगर आपको फर्म कमिटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रुके रहना पड़ेगा उनके लिए, वो आपके पास आएंगे भी नहीं. Firm means definite, exact, for sure, not maybe or perhaps or I will do my best. फर्म का मतलब पक्का, जरूर, मतलब रियली मैं आऊंगा. Not if I can rearrange my schedule, I will be there. ऐसा नहीं कि अगर मेरे को समय मिले तब मैं आऊंगा. Those are all no's. वो सब नो के बराबर होता है. Those people aren't coming. वो सब लोग नहीं आएंगे. So you want to make sure that you're getting firm commitments if you're meeting with somebody on a time and location that you're meeting. आपको ये होना चाहिए कि एक आदमी से आपको पक्का कमिटमेंट मिले, कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे. If it's a small group presentation, you want to say, could you do me a favor? अगर ये छोटा सा ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो. If anything becomes a conflict, can you give me at least a 24-hour notice so that I can invite somebody else to replace you? अगर किसी कारण के लिए आप नहीं आ सके, क्या मेरे को आप 24 घंटे के नोटिस दे सकते हो, so that आपके जगह में मैं किसी और को बुलाऊं? Because what happens, somebody comes home from work, बिकॉज ये होता है, देखो कोई आदमी काम से जब घर में आता है, they're tired. वो एकदम टायर्ड होता है. Yeah, the kids are saying, Daddy, Daddy, can you stay home? बच्चे बोलते हैं पापा पापा घर में रह जाओ. And you'll have a high percentage of people not show up if you don't ask for a 24-hour notice. और आपको बहुत हाई परसेंटेज लोग आपके पास नहीं आने का चांस है जब आप उनको 24 घंटे के नोटिस नहीं मांगोगे तो. If you're meeting somebody at a coffee shop, you want to say, it's going to take me an hour to get there. Would you do me a favor? अगर आप किसी को कॉफी शॉप में मिलना चाहते हो तो उनसे बोल सकते हो मेरे को कॉफी शॉप पहुंचने के लिए 1 घंटा लगेगा, आप पहुंच सकते हो 1 घंटे में. I'm going to be right on time. मैं पर समय मैं पहुंचूंगा कॉफी शॉप. I won't be late. मैं लेट नहीं होऊंगा. If you're going to be late, would you give me at least an hour notice so that I'm not sitting there waiting for you? बट अगर आप लेट होंगे तो मेरे को 1 घंटा पहले बोल दीजिए. Now you have to use the words that are right for you. आपको वैसा शब्द यूज करना चाहिए जो शब्द आपके लिए सही हो उस समय. I'm just sharing you the concept of what you need to be thinking about. मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही बोल रहा हूं अभी. All right. The next step is you must master giving effective presentations. दूसरा स्टेप है आपको मास्टर बनना है प्रेजेंटेशन देने में. When you meet with someone, the first thing you do is always show an interest in them. जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाना है. How's your wife doing? आपका वाइफ कैसा है, How's your children? बच्चे कैसे हैं, Show an interest in them. इंटरेस्ट दिखाइए उनके ऊपर. How's your insurance business? आपका इंश्योरेंस बिजनेस कैसा चल रहा है. You see, when you show an interest in others and the things that are important to them, they will show an interest in you and the things that are important to you. जब दूसरे के ऊपर आप दिखाते हो इंटरेस्ट तो वो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू करता है. If you don't show an interest in others, they're not going to show an interest in you. अगर आप दूसरे को इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो वो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा. When you go to a social event and people show an interest in you, do you feel a greater connection with that person? जब आप किसी फंक्शन में जाते हो और लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप क्या सोचते हो उनके बारे में. Or the person who just comes up to you and just talks the whole time and shows no interest in you? और यहाँ होता है फंक्शन में जा रहे हो वो अपने बारे में बात करता है, आपके बारे में पूछता ही नहीं है कुछ भी. So the more you show an interest in people, the more they're going to connect with you. तो जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे लोग उतने आपके साथ कनेक्ट होंगे. The more they're going to like you. और वो आपको लाइक भी करेंगे. And the more open they're going to be to what you have to say. और वो आपको सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे. So the first thing you're going to do with anybody you meet with is spend some time and connect with them by showing an interest in them. So पहली बार अगर किसी को मिलते हो तो थोड़ा सा समय लीजिए उनके साथ कनेक्ट होने के लिए. Then you want to ask questions to determine if this person is open to creating a secondary income. उसके बाद कुछ प्रश्न पूछना चाहिए उनसे ताकि आपको जानकारी हो क्या वो कुछ दूसरा इनकम करने के लिए रेडी हैं क्या. So you could say, just between you and me. वो आप बोल सकते हो आप और मेरे अंदर मैं पूछना चाहता हूँ एक बात. How are things going with your insurance business? आपका इंश्योरेंस बिजनेस कैसे चल रहा है. Because if you ask a salesman in insurance, how are things going, they're always going to tell you great. अगर आप सेल्स या इंश्योरेंस लोगों को पूछते हो आप कैसे चल रहा है वो हमेशा अपने बहुत अच्छा चल रहा है. Let me ask you a question off the record. मैं अभी आपको पूछना चाहता हूँ बिना रिकॉर्ड के. Just between you and me. आप और मेरे बीच में. How happy are you with your real estate business? आप कितने खुश हैं रियल एस्टेट बिजनेस को लेके. Do you ever think about doing anything else? क्या आपने सोचा कुछ और करने के लिए. You see, if you can identify an interest or a need on that person's behalf,
they're going to be much more receptive to your presentation. अगर आप उनके इंटरेस्ट और उनके नीड के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको वो सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। See, these are little things, friends, that make a big difference. दोस्तों, ये बहुत छोटा छोटा चीज है जो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। These are the little things that are going to give you greater results. ये चीज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। You see, most people just sit down and present. बहुत लोग, ज्यादातर लोग खाली बैठ के प्रेजेंटेशन देते हैं And then they can sit there and try to pick apart their presentation and say, what did I not do well? और फिर वो बोल सकते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन मैंने क्या चीज अच्छा नहीं किया। It had nothing to do with your presentation. वो कुछ प्रेजेंटेशन के साथ लिंक नहीं था। You didn't connect with them before you started. आपने उनके साथ कनेक्ट ही नहीं किया स्टार्ट करने से पहले। And you didn't identify any need or desire they have for what you're offering. आपने ये भी आइडेंटिफाई नहीं किया उनके पास नीड है या डिजायर है क्या कुछ। That's the value of coming to an event like this, because you're going to be picking up little things here that are going to help you have better results. यही वैल्यू मिल रहा है आपको इस इवेंट में, बिकॉज आपको छोटी छोटी बातों के बारे में बोल रहा हूँ अभी। Use a professional presentation book. आप एक प्रोफेशनल किताब यूज कीजिए जिसको लेके आप प्रेजेंट करेंगे बिजनेस को। If you open up something that looks all wrinkly and dirty, it's not going to be impressive. एक गंदा किताब जैसा अगर आप दिखाते हो लोगों को, वो इंप्रेसिव नहीं होता। But if you open a nice leather binder, बट आप अगर एक लेटर बाइंडर फोल्डर को खोलते हो, now they're impressed. वो काफी इंप्रेशन क्रिएट करता है। And now your presentation pages in that binder are all professionally done. That's impressive. और उस बाइंडर के अंदर आपका प्रेजेंटेशन किताब है। Tomorrow I'm going to do a business presentation. कल मैं आपको दिखाऊंगा बिजनेस प्रेजेंटेशन। And you tell me what you think of those slides. फिर आप बोलिए मेरे को, आप उस स्लाइड्स को देखने के बाद आप क्या सोचते हो। You can turn that into a PDF and put it in your own book. आप उसको PDF कर सकते हो, आप अपने किताब में रख सकते हो। You have professional looking pages. It's going to make our whole business look more professional. आपका वो है किताब काफी लगेगा प्रोफेशनल और हमारा बिजनेस भी दिखेगा प्रोफेशनल। Then you need to master identifying what a person needs to know to make a decision. अभी आपको मास्टर होना चाहिए इसमें कि क्या चीज उसको जानना जरूरी है एक डिसीजन को लेने के लिए। So now your presentation is done. आपका हो चुका प्रेजेंटेशन अभी। You're sitting across the table from your prospect. उनके साथ आप बैठे हो टेबल में। What do you say? क्या बोलोगे उसको? First thing is you want to talk about something positive. पहला चीज है एक पॉजिटिव बात उनसे करना है। So I always ask, what did you like about what you learned? मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, आपको क्या अच्छा लगा जो मैंने दिखाया अभी। And when they answer, I say, what else did you like about what you learned? जब वो हमको आंसर करते हैं तो मैं पूछता हूँ और क्या अच्छा लगा आपको। I want them focusing on what they liked about what I presented. मैं उनको ये चाहता हूँ कि वो फोकस करे कि उनको क्या अच्छा लगा मेरे बारे में या हमारे बारे में। And then I always ask, what do you need to know that I didn't share with you that would help you determine if this is something that's right for you? फिर मैं पूछता हूँ ऐसा क्या चीज है जो मैंने आपको नहीं बोला जिसको जानने के बाद आप और अच्छा आपको फील होगा। And the person responds and says, well, I need to know a little bit more about your company. फिर वो बोल सकता है कि हाँ मेरे को आपके कंपनी के बारे में और कुछ जानना है। So now I'm going to isolate that question or concern. और फिर मैं उस क्वेश्चन को अलग से रखूंगा। And I'm going to say, other than the company, what else do you feel you need to know to determine if this is right for you? और फिर बोलूंगा कंपनी के सिवा और क्या चीज है आपको और जानना, आपको जानकारी चाहिए। Well, I feel like I need to know a little bit more about your products. मेरे को लगता है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को और कुछ जानकारी चाहिए। Well, other than learning more about our company and our products, what else do you feel you need to know? ठीक है, कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में उसके बाद और क्या चीजें आपको और जानकारी चाहिए होगा। Those are the main 2 points. यही हमारा दो पॉइंट है। Then you come back to the first one. फिर आप पहली बार में जाइए। And then you say, what specifically would you like to know about our company that I didn't share with you? फिर पूछिए कंपनी के बारे में क्या चीज स्पेसिफिकली आपको जानना है। You want to know what specifically they need to know. You're just not running your mouth with what you think they need to know. आपको ये जानकारी चाहिए स्पेसिफिकली उनको क्या जानना है ताकि आप अनसन ना बके उनके सामने। They might say, is this company publicly traded? वो पूछ सकता है आपको ये कंपनी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है क्या? And you say no. आप बोलेंगे नो। And then you say, is there anything else you want to know about the company? क्या आपको और कुछ जानना है कंपनी के बारे में? They say, no, that was it. बोलेंगे नहीं यही हमको जानना था। But if you didn't know that that's what they cared about, you could spend 5 minutes talking about this company and not even address what they really wanted to know. पर अगर आपको नहीं मालूम चलता क्या चाहिए उसको आप 5 मिनट तक बकते जाते होंगे। And then you'd say, what do you feel that you need to know about our products that I didn't share with you? फिर पूछ सकते आपको क्या जानकारी चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में?
Well, I'd like to know if they have been backed by science and research and if they're endorsed by the medical community. वो बोल सकते हैं कि ये कंपनी आपका साइंस बेस्ड है और मेडिकल प्रोफेशन में ये एंडोर्स किया हुआ है क्या, And then you can address that. और फिर उसके बारे में बोल सकते हो आप. And then when you're done, you say, does that answer your question? उसके बाद पूछ सकते हो कि क्या आपके प्रश्नों को मैंने उत्तर दे दिया है. And the person says yes. वो बोलते हैं हाँ जी. And then what I always say is, would you like to know your next step? और फिर पूछता हूँ कि आपको जानना है आपका दूसरा स्टेप क्या हो सकता है इसके बाद. That's how I get a positive decision. उसके बाद मेरे को ऐसे ही मिलता है पॉजिटिव डिसीजन. I address people's questions or concerns. मैं लोगों के प्रश्न और चिंता को मैं एड्रेस करता हूँ. I make sure that what I've shared with them addresses their question or concern. और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आपने जो पूछा मैंने आपको सही तरह से दिखाया कि नहीं. And when they have, I say, would you like to have me show you your next step? और उसके बाद मैं उनको पूछता हूँ इसके बाद वाला स्टेप क्या मैं सिखाऊं आपको. And so just as you can't eat soup with a fork, you can't get positive decisions without asking. जैसे आप सूप नहीं खा सकते फोर्क के साथ, आपको पॉजिटिव डिसीजन कभी नहीं मिलेगा अगर आप नहीं पूछोगे तो. So it's not that I say, are you ready to join my business? मैं कभी ऐसे नहीं पूछता कि आप मेरे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं. I say, would you like me to show you your next step? मैं पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाऊं. And then I will explain to them their next step. और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. And then I will ask for my decision. और फिर मैं पूछता हूँ उनका डिसीजन. I'd say, do you feel comfortable? I always say, would you feel comfortable working with me? और फिर यही पूछता हूँ कि आप मेरे साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल फील करोगे क्या. And then I say, I would love to work with you. और फिर मैं बोलूँगा मैं सही में आपके साथ काम करना चाहता And हूँ. then I reach across and I say, hey, I'm looking forward to it. और फिर मैं जाके उनके साथ मैं आके हैंडशेक करता हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए. And I shake their hand and the decision's been made. और जैसे मैं हैंडशेक करता हूँ डिसीजन बन चुका होता है. I don't look for them to say, yes, 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 I'm ready to join. मैं इसके लिए वेट नहीं करता कि वो यस 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 बोलेगा मैं ज्वाइन करूंगा. You see, if you're going to be a master recruiter, these are all the little refinements you need to be making. अगर आप एक मास्टर रिक्रूटर बनना चाहते हो ये सारा रिफाइनमेंट आपको करना पड़ेगा. Are you getting some ideas? क्या आपको आइडियाज आ रहा है अभी. Little things make a big difference. छोटी छोटी बात बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है. It's not the big things that make the difference, friends. बड़ा चीज बड़ा डिफरेंस नहीं करता है. It's the little things that make the difference. छोटी छोटी चीज बड़ा डिफरेंस कर सकता है. Everybody knows the big things. सब जानते हैं बड़े चीज को. It's not the big things. ये बड़ा चीज का बात नहीं है. It's the little things. छोटी छोटी बातों का चीज है ये. Now, if somebody doesn't make a decision to get started, अगर कोई डिसीजन नहीं लेता है स्टार्ट करने के लिए तो क्या होता है. you need to master the belief building process. अभी आपको मास्टर करना पड़ेगा बिलीफ का जो प्रोसेस हमारा है. So, if somebody says, I need to think about this, अगर कोई बोलता है मेरे को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, what I always ask is this. मैं ये पूछता हूँ उसको उसके बाद, Would you mind sharing with me what's holding you back? क्या आपको क्या चीज रोक रहा है आपको. You see, I can't address what's really holding them back unless I find out. मैं उसके बारे में नहीं बोल सकूं जब तक वो नहीं मेरे को नहीं बोलता क्या चीज उसको रोक रहा है. Well, I need to make sure that my husband or my wife will approve of me doing this. मे भी वो बोलेगा मेरे को कि मेरे को मेरे हस्बैंड या वाइफ से पूछना पड़ेगा सबसे And पहले. I'd say, I understand that. और मैं बोलूंगा मैं समझता हूँ इसके बारे में. Is there anything else holding you back? और कुछ ऐसा चीज है जो आपको रोक रहा होगा इसके बारे में. No, that was it. नहीं यही चीज मेरे को रोक रहा है. So if your husband accepts this and approves, then you'll be ready to get started? उसका मतलब अगर आपका हस्बैंड इसके बारे में एक्सेप्ट करता है तो आप स्टार्ट करोगे. And she says yes? वो बोलेगा हाँ. Would it be helpful if I met with your husband to show them the business and was able to answer his questions? क्या अच्छा होगा कि मैं आपके हस्बैंड को मिलूं और इसके बारे में समझाऊं. Would you rather have your person go home and try to explain the business to their spouse, or would you rather do that? आपको कौन सा अच्छा होगा कि वो आपका प्रोस्पेक्ट घर में जाके हस्बैंड को समझाए या आप जाके हस्बैंड को समझाओ. Now, anytime you send somebody home after a presentation, you really should send them home with something in their hands that they can review on their way home. जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप घर भेजते हो उनके हाथ में कुछ दे के भेजिए ताकि वो घर में जाकर उसको देख सकते हैं. And before they leave, you must schedule your next step. और जब वो छोड़ने से पहले आपका दूसरा स्टेप क्या होगा उनके साथ उसको भी उनसे तय करना पड़ेगा. One of the best ways to build people's belief is through a three-way phone call. और सबसे सही तरीका है लोगों का बिलीफ को बिल्ड करने के लिए 3-वे कॉल. If you don't know how to do three-way phone calls, you need to learn how to do three-way phone calls. अगर आपको नहीं मालूम 3-वे कॉल कैसे किया जाता है आपको सीखना पड़ेगा ये. So if Chandra here is somebody that is getting ready to go home and he needs to talk to his wife, and maybe that's all he needs to know, I'd say,
Chandra, I'd also like you to meet one of my business partners. अभी चंद्रा जैसे है वो अपने घर जाना है उसको वाइफ को मीट करने के लिए और फिर मैं उनको बोलूंगा मैं आपसे मेरा एक बिजनेस पार्टनर के साथ बात करना चाहता हूँ. And if Kishore was my upline, I said I would tell him about Kishore. और अगर किशोर मेरे अपलाइन है तो मैं चंद्रा को किशोर के बारे में बोलूंगा. I'd like to schedule a brief time so you can meet him so that you can see the team of people that would be working with you. और फिर बोलूंगा कि मैं आपको चाहता हूँ कि हमारे लोगों से मिलो ताकि आपको समझ में आए हम लोग क्या कर रहे हैं. What does your schedule look like over the next 24 hours where you've got a couple windows of time that you'd be available? ये 24 घंटे में आपको कितने समय आप फ्री होंगे ताकि हम लोग बात कर सकते हैं. कहाँ कहाँ आप फ्री रहोगे 24 घंटे के अंदर. I'd make a note of those times. उस टाइमिंग के बारे में नोट कर लेता हूँ. And then I'm going to say, okay, I'm going to reach out to Kishore and find out when he's available. And would you like me to text you the firm time? और फिर मैं बोलूंगा मेरे को किशोर से बात करनी चाहिए ताकि वो अवेलेबल है कि नहीं ताकि मैं उससे मालूम चल जाऊँ. फिर उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट करूंगा. And then I send Kishore a message. और फिर मैं किशोर को भेजता हूँ एक मैसेज. And I say, I've got somebody I'd like for you to talk to. और उनको बोलता हूँ एक आदमी है जिनसे आपको बात करना है. He's available during these windows of time. और उनका टाइम का अवेलेबिलिटी ये है. What works for you? तुम्हारा कौन सा टाइम समय है. ठीक है. And ideally, you want to talk to people when they're at home in a quiet environment, not when they're on a bus. सबसे आइडियल टाइम तब होता है जब वो आदमी घर में हो. Or when they're distracted. और अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो तो वो अच्छा समय नहीं होता. Now, maybe I'm not scheduling a three-way call, and if that's the case, I'd say, Chandra, when do you think you'll have a chance to talk to your wife about the business? अगर मैं 3-way कॉल नहीं करता तो मैं चंद्रा को पूछूंगा तुम अपने वाइफ से कब बात करोगे. Well, I'll talk to her tonight. और वो बोल सकता मैं कल आज रात को बात करूंगा. Would it be okay if we talk tonight on the phone, and then that way, if she's got any questions, I could meet her over the phone and answer any of her questions as well as anything else you've thought about? तो मैं बोलूंगा क्या ये सही होगा कि रात को अगर वो फ्री रहते हैं तो हम लोग सब एक साथ बात कर सकते हैं आपकी वाइफ के साथ. But I am not going to let him leave this appointment without me knowing the next step. चंद्रा को कभी नहीं छोड़ूंगा. मेरा नेक्स्ट स्टेप उनके साथ क्लियरली अगर मैं क्लियर नहीं करूं तब तक मैं उनको नहीं छोड़ूंगा. It's either a firm time to talk. ये हो सकता है कि समय कौन से समय बात करेंगे हम लोग. A time I'm going to get back to him to do a three-way phone call. और कब मैं उनको बताऊंगा कि आपका 3-way कॉल कब होगा. Maybe there's an event the next day and I'm going to invite him to that event. ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे दिन हमारा कुछ इवेंट हो वहां मैं उनको बुलाऊं. And if I'm going to invite him to an event, I'm going to do it in this following way. अगर मैं उनको अपने इवेंट में बुलाऊं तो मैं उनको इस तरह से इनवाइट करूंगा. The event starts at 7:30. इवेंट शुरू होगा 7:30 बजे. But Chandra, I would like for you to come early so I could introduce you to some of my business partners. बट चंद्रा मैं आपको थोड़ा पहले आने के लिए मैं बोलता हूं सो दैट मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको मिलाऊं. Would you be able to come at 7? आप क्या 7 बजे आ सकते हो? Sounds great. Now, Chandra, if anything becomes a conflict, could you do me a favor and give me at least a 24-hour notice because I'm going to be there looking for you. अगर चंद्रा ऐसा हो कि आप आ नहीं पाए क्या मेरे को 24 घंटे का नोटिस दे सकोगे? And if I was meeting him at this location, I wouldn't say I'll meet you in the office. और अगर मैं यहाँ मिलता तो मैं चंद्रा को कभी नहीं बोलूंगा मैं आपको ऑफिस में मिलूंगा. I would say at 7 o'clock, I'm going to be right down on the street. You'll see me standing there. I'll be waiting there for you. मैं उनको बोलूंगा 7 बजे मैं नीचे एक गली में रहूंगा आप वहां आ जाइए मैं आपका वेट करूंगा. Now, why does that little thing matter? ये छोटी सी बात क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? Because when he's at home and he's thinking he doesn't want to come, he's thinking, oh, Todd's in the room with all the other people. बिकॉज अभी अब जब चंद्रा घर में रहेगा तब वो सोचेगा अरे टॉड तो बहुत लोगों के साथ बैठा हुआ है ऑलरेडी. No, I want him thinking Todd's standing down there on the street waiting for me. और ये होगा ऐसा अभी क्या टॉड सोचेगा कि टॉड तो वो गली में खड़ा हुआ होगा मेरे लिए. Friends, these are little things I've learned over 27 years that make a big difference. ये छोटी सी बात मैंने सीखा है 27 सालों में जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है. Now, if I really want to make sure he comes, I will go pick him up. और अगर वो सही तरह के वो सचमुच आता है तो मैं जाके उनको लेकर आऊंगा. In fact, Chandra, you're not far from me. How about I come to your house at 6:30 and we could drive together? ऐसा हो सकता है कि चंद्रा तुम मेरे घर से बहुत सामने हो क्या मैं तुम्हारे घर में आऊं 6:30 बजे आके हम दोनों एक साथ आ सकते हैं. Because if somebody comes with you to the meeting, you know they're going to show up. और जब आपके साथ जो आता है तो आपको 100% गारंटी होता है कि वो आएगा ही आएगा. And remember this, master recruiters are those who are consistent in their prospecting, measure their results, and are always looking at every little thing they can do to get better. मास्टर रिक्रूटर वो है जो बार बार अपने काम करने वाला काम को मेजर करता है और उसके ऊपर बेहतर से बेहतर बनने का वो कोशिश करता है. So my challenge to you
is strive for excellence during your recruiting process. सो मेरा चैलेंज यही है, बेहतर से बेहतर बनने का कोशिश कीजिए आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। Look at everything you're doing and say, how can I do what I'm doing better? जो भी कर रहे हो आप उसको देखो और सोचो कि इससे बेहतर मैं और क्या कर सकता हूँ। And remember, the way you invite somebody, you're teaching them how to invite. और ये आप जान लो, जैसे आप इनवाइट करते हो दूसरे आदमी को सिखा रहे हो ऑलरेडी किस तरह से इनवाइट किया जाता है। Now, they're not thinking I'm being taught how to invite, वो उस समय उसको नहीं मालूम चल रहा है कि आप उनको सिखा रहे हो, but if they join the business, they'll never forget what you said to them. बट अगर वो आपके साथ बिजनेस में जुड़ता है वो कभी नहीं भूलेगा पहली बार आपने उनको किस तरह से इनवाइट किया था। When they say hello, that is the beginning of the duplication process. जैसे ही आपका नया आदमी हेलो बोलता है फोन में, आपका डुप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। What you say from that point forward is teaching them how we do this business. उस हेलो के बाद आप जो भी बोलते हो आप नए आदमी को ऑलरेडी सिखा रहे हो हमारे बिजनेस को हम लोग इनवाइट कैसे करते हैं। When you present the business to somebody, you're teaching them how we present our business. जैसे ही आप नए आदमी को बिजनेस को प्रेजेंट करते हो उनके सामने, उनको सिखा रहे हो हमारे बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग। And friends, it's critical you have a presentation book, और ये बहुत क्रिटिकल है कि आपके हाथ में एक प्रेजेंटेशन किताब हो, because they need to be saying, I can do what you're doing. बिकॉज ये होना चाहिए नए आदमी आपको देखने के बाद वो बोलना चाहिए मैं भी कर सकता हूँ आप जो कर रहे हो। If you're using a napkin and making notes and pieces of paper and making notes, and you have all different kinds of things and you're making notes, that's not duplicatable. अगर आप नैपकिन में लिख रहे हो, कागज के ऊपर लिख रहे हो, ये सब चीज डुप्लीकेशन नहीं होता है। Getting into details of our compensation plan is not duplicatable. हमारे कॉम्पनसेशन प्लान के डिटेल्स के बारे में बात करने वाले जो लोग हैं उनको लोग डुप्लीकेट नहीं कर सकते। Now, if they want to know more about the compensation plan after the presentation, then you can talk to them more about that. अगर उनको कॉम्पनसेशन के बारे में और जानना है तो प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग बात कर सकते हैं। But you don't get into details on the compensation plan during a presentation. कॉम्पनसेशन के बारे में डिटेल हम लोग प्रेजेंटेशन के समय नहीं देते हैं। You need to put yourself in the position of a prospect and ask yourself, how would I respond to this presentation? आपको सोचना पड़ेगा अगर मैं होता इसके जगह प्रोस्पेक्ट तो मैं ऐसे प्रेजेंटेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करता। So make sure everything you're doing is 100% duplicatable. उसका मतलब आप जो भी कर रहे हो ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी आपको पूरी तरह से डुप्लीकेट कर सके। Make sure everything you're doing is exactly consistent with your training system. जो भी कर रहे हो आप उसके साथ आपके ट्रेनिंग सिस्टम के साथ मिलना चाहिए। You see, when you invite somebody and then they go through the how to invite in your training system, you want them saying, he did exactly what is in this training system. जब आप किसी नए आदमी को अपने सिस्टम को सिखा रहे हो और आप हाउ टू इनवाइट के चैप्टर को कवर कर रहे हो, उसको जानना, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो बोलेगा कि इसने इसी तरह से मेरे को इनवाइट किया था। But if you say one thing and they read something that contradicts what you did, they're going to wonder what they should do. पर ऐसा हो सकता है कि आपने बोला कुछ, आप कुछ और सिखा रहे हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करेगा, कौन सा करेगा। And then you undermine the entire duplication process. और आपका जो प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन है उसको आप बहुत लो लेवल में रखते हो। And duplication is where you make the big money in this business. और डुप्लीकेशन ही वो चीज है जहां से सबसे बड़ा इनकम कर सकते हो आप। Everything, 100% of the things you do in this business must be things that everybody else can do. सब चीज इस बिजनेस में ऐसा होना चाहिए, वो डुप्लीकेशन में होना चाहिए ताकि सब लोग उसको कर सके। If you're doing something that not everybody else can do, you shouldn't do it. अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो अलग दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, आपको वो काम नहीं करना। So did you get some good ideas? आपको कुछ मिल रहा है आइडिया, अच्छा आइडिया? Well, thank you for your attention.